Okay, we'll first of all understand the basic idea of this nomenclature and then we will move forward. Okay. See, the basic idea is coordination compound. If I look at the complete compound, for example, let us take some example here. Yeah, for example, if you have CONH3 whole 6 and Cl3 like this. Okay, so when I talk about this complete compound, I will be talking about this as an ionic compound because this is one ion and this is another ion. So it will be similar to AlCl3. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. Is this clear? Yes or no? The counter ion is going to be the same, right? Here, this is one ion which will be having positive charge and this will be having negative charge. Similar to Al is going to have 3 positive charge and you are going to have 3 chlorine ions with 3 negative charge. Okay, so you'll have negative, negative, and negative. In total, you will have 3 negative charge. Similarly, you will, if you have coordination compounds, here also the charges is going to be the same. The ions are going to be the same, similar way. Now we are named this aluminium chloride. Okay, we name this as aluminium chloride. We don't write trichloride. So the counter ion's name will be as same as what? Same as the simple ionic molecule. Also, whenever we write the name of an ionic molecule, we write aluminium chloride, sodium chloride, potassium bromide, potassium cyanide, right? So all of these things you can see that we are naming the cation first and then we name the anion. So this is the first point that you are going to write. First point that you are going to write. Please write with me. Cation is named first. The first rule is cation is named first. First and then the anion. Number 2, counter ions are named as it is. ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पे काउंटर आयन पोटेशियम आ गया तो यू विल नेम इट एज पोटेशियम. कहीं पे आपके पास क्लोरीन आ गया तो विल नेम दिस एज क्लोराइड, है ना, जैसा कि आयनिक नेमिंग में होता है. अगर आपके पास SO4 आ गया तो इसको हम लोग क्या सल्फेट बोलते हैं, तो इट विल बी सल्फेट. ओके, एंड सो ऑन. इफ यू हैव सोडियम Na तो आप इसको कैसे नेम कीजिएगा, सोडियम. Okay, so this is how you are going to name the counter ion. Now, whether the counter ion is anion or cation, you are going to name it as it is. Now comes the part that is naming of coordination entity. Please write. Third. Oh God, itna late aa rahe bachche. Sorry guys. Okay, write the third case. Third rule, naming of coordination entity or complex. Naming of coordination entity. Now, when we name the coordination part, we name the ligand first and then we name the central metal atom. So please write. Ligands are named first and then the central metal atom. Guys, those who are late, please write these 3 points. Okay, please write these 3 points. It's important. Razan, Samiha. Samiha, you will tell me when you are done with these 3 points, okay? Yes, sir. Done. Who is done? Razan or Samiha? Samiha.
Razan, what about you? लिख लिया आपने? Done. Done. ठीक है. Now we are talking about the coordination entity. In coordination entity, the ligands are going to be named first, and then we are going to name the central atom. Now, in naming of ligands, please write. We'll deal with the naming of ligands. So write A part, naming of ligands. Now, in naming of ligands, we have three types of ligand. We have anionic, cationic, and neutral. So please write. If you have an ionic ligand, then they will end with O. If you have cationic ligand, then ends with EM. And fourth, if you have neutral ligand, these are unchanged. ना इसको हम लोग चेंज करके नहीं लिखते. Now I hope you have the list of anionic, cationic, and neutral ligands. Yes or no? Please tell me, guys, from the last lecture. All of you have the list? Yes, sir. Okay. Now, in the naming of ligands, for example, we have जैसे मान लीजिए आपके पास है, you have cobalt, 1 chlorine, you have NO2 whole 4, and then you have NH3, and here you have Cl. Okay. Now, first of all, tell me, अभी तक मेटल को हमने नेम नहीं किया है, बट वी कैन नेम द काउंटर आयन. तो यहाँ पे काउंटर आयन क्या हो जाएगा बताइए गाइस. काउंटर आयन विल बी व्हाट इज द काउंटर आयन हियर? Cl. Cl कैसा होता है? Cl नेगेटिव होता है. तो इसको Cl नेगेटिव को कैसे लिखते हैं बताइए? What will be the counter ion? How will you write? You will write as it is ना. कैसे लिखते हैं? अगर आपके पास NaCl होता तो इस Cl को आप कैसे लिखते? Tell me. Tell me guys. If you had NaCl, then how would you have written this chlorine? नाम में कैसे लिखते? How would you have written the name? ये तो symbol हो गया ना, formula हो गया. What is the name of this compound? Tell me. NaCl को क्या बोलते हैं? Sodium NaCl नहीं chloride. पता. हाँ, तो फिर Cl को, हाँ, तो Cl को क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड. तो यहाँ पे भी Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड. ठीक है, क्लोराइड. ठीक है. अच्छा, अभी आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कम से कम. सो टेल मी व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम हियर? व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम? Cobalt. Cobalt. हाँ, ठीक है, इट इज कोबाल्ट. एंड व्हाट आर द लिगेंड्स? लिगेंड्स में है आपके पास Cl नेगेटिव. सही है? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Cl है ना. एंड NO2 में बताइए क्या चार्ज होता है? देख के बताइए कौन से ग्रुप में आता है ये, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर आपके पास इसमें न्यूट्रल में. एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल. NO2 किस में है? Positive. NO2 पॉजिटिव में है. ठीक से देखिए. NO2 किसमें? नाइट्रेटो आपको दिखा नेगेटिव में है. NO2. Yes, sir. Yes. Okay. So here we are going to have Cl negative, and this is, there are 4 NO2, that is going to be nitrito. 4 NO2 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 is going to be nitrito. 4
and then you have one NH3, right? अच्छा, एक यहाँ पे काम कीजिए, NO2 को एक ही रहने दीजिए, NH3 यहाँ पे 4 होगा, अदरवाइज मेटल का चार्ज बिगड़ जाएगा। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। NO2 इज 1 एंड वी हैव 4 NH3 ग्रुप्स, ठीक है। तो क्लोराइड को Cl नेगेटिव को लिखेंगे क्लोरिडो, NO2 को राइट नाइट्रीटो, एंड व्हाट अबाउट NH3? 4 के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी टेट्रा, ठीक है। दैट इज फॉर 4, दैट इज नॉट द नेम ऑफ लिगेंड, दैट इज जस्ट 4 टेट्रा, एंड देन यू विल हैव अमीन, AMMINE. Now how will you write the name of the ligand? So first of all you will start with, see the names. Chlorido starts with C, nitrito starts with N, and what about this one? ये किससे start होता है? Tell me guys. What is the first letter here? What is the first letter here for NH3? What is the first letter for NH3? अरे फर्स्ट लेटर नहीं दिख रहा आप लोग को, आप जवाब तो दीजिए ना, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? रेहान, रजान, समीहा साहब, हाँ, टेल मी गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर फॉर NH3? Others, I am asking others. Razan, Samiha, Sara, Wafia, please answer. What is the हाँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। This tetra is telling me about the 4, number 4 है ना, कि 4 अमोनिया है, बट लिगेंड क्या है हमारे पास? लिगेंड इज अमीन, है ना? You saw the difference? Yes or no? You understand the difference? You have to name Yes. the ligands, है ना? You have to name the ligands, and when you are writing the name of ligand, you will not count the number, है ना, कि कितनी दफा आ रहा है वो, how many times it is present. So if I am talking about the ligands, so you will write the alphabetical order, and in alphabetical order, you will first of all write tetraamine. After that, you are going to write chlorido, and after that, you are going to write nitrito. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Right next. अच्छा, इसको लिखिएगा. If you have not written, please write this, and then after that, you will write. Ligands are named. In alphabetical order. Let me know if you're done. Once you're writing this, we'll write a question. Identify and name the ligands in following, and also give the order of naming. One, 2, 3, and 4. I hope you have the list of the names. Okay, उसी लिस्ट से बस आपको देख देख के लिखना है. You have to write the names and order आप खुद से, है ना, alphabetical order खुद से याद रखिए. You have to name it like this only, tetra, di, tri, इस तरह से. I hope you know that if you have 2 ligands, then it is going to be di. If you have 3 ligands, then it is going to be tri, and so. ठीक है, but इसके बाद थोड़ा सा डिटेल है, that will understand in the few moment. But यहाँ तक आप कर सकते हैं.
प्लीज राइट आइडेंटिफाई द लिगेंड। लिगेंड लिखिए सबसे पहले जिस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कि Cl नेगेटिव है तो क्लोरिडो, NO2 नेगेटिव है तो नाइट्रिटो, NH3 है तो अमीन। इस तरह से आप सबसे पहले लिगेंड्स को लिखिए, उसके बाद उनके नाम लिखिए, एंड देन यू विल राइट द ऑर्डर इन दिस ऑर्डर, ठीक है। 1 2 3 करके चलिए कर लेंगे ना, या फिर एक करके दिखाएं? टेल मी गाइस, शुड आई डू वन और ऑल ऑफ यू कैन डू दिस? रेहान, रज़ान, समीहा, सारा, वाफिया। Sir, can I do one? I should do one. Tell me which Yes. one. Tell me which one. Third one. Third one. ठीक है, कीप योर माइक ऑन। हम थोड़ी ना करेंगे, आप ही कीजिएगा। कीप योर माइक ऑन जी। सबसे पहले टेल मी काउंटर आयन। टेल मी काउंटर आयन। Is it PT? सॉरी, काउंटर आयन। काउंटर आयन, काउंटर आयन आइडेंटिफाई करना कैसे है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के जो बाहर हो, वट एवर इज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज काउंटर आयन। डू वी हैव एनी काउंटर आयन हियर? No. हाँ, सो देयर इज नो काउंटर आयन, ठीक है। ब्लैंक छोड़ दिया आपने। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम रिहान। क्या होगा ना? सॉरी, PT. PTCl2. नहीं, PtCl2 नहीं, प्लैटिनम है, ठीक है। यू शुड नो व्हाट आर द एलिमेंट्स रेहान। Yes, sir. प्लाट, इसका क्या नाम है पीटी का? Platinum. लिगेंड से बताइए क्या क्या है हमारे पास। टेल मी इन लिगेंड्स व्हाट डू वी हैव? Cl2. वी हैव C5. टू Cl नेगेटिव। इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए? और शुड आई राइट द नेम फॉर दिस? Chlorido. नहीं, ट्राई वन सेकेंड। Dichlorido. उसके बाद व्हाट डू वी हैव? C5H5N। Look at the list, identify. Look at the list and tell me what ligand is this? C5H5N. G. What ligand is this? This is positive. Sorry, this is? Positive है ना? नहीं, पॉजिटिव नहीं है। सी आपको लिंक दिख जाएगा ना लिस्ट में, देखिए आप, इट इज देयर इन द लिस्ट। C5H5N इसी तरह लिखा हुआ है, बिल्कुल जोर से बोलिए। Neutral. नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम फॉर दिस लिगेंड। नाम क्या है इसका? Pyrite. Pyridine. pyridine, okay. And then what else do we have? Is there any other NH3. ligand? Yeah, NH3. NH3. NH3 will be what? What is the name for NH3? What is the name Amine. for NH3? AMMINE. Now tell me, according to the alphabetical order, which one should I name first? Which one should I write first? Sorry? अच्छा, amine पहले आएगा. Amine पहले आएगा, second. Then dichlorido. And then? Then pyridine. बस ऐसे ही करना है। अब जो जो सवाल हमने आपसे पूछा वो आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए, है ना? Listen here guys, in fourth one you have a ligand जिसका नाम शायद नहीं है, so this ligand you have nitrogen, इसको डाई नाइट्रोजन लिखते हैं।
Okay, the name will be dinitrogen. The name is going to be dinitrogen. And here we have another, that is NH3, that will be pentaamine. First you'll name amine and then you'll name dinitrogen, that is 2. Okay. Fourth one we have कर दिया हमने. You have just 2 remaining. Please do it on your own. Three more minutes, guys. Samia, you have joined now. Samia. Samia, am I audible? No. Okay, guys. What happened? No answers. किसी ने आंसर नहीं भेजा? See the first one. In first one we have what? 2Cl negative, that is dichlorido. What happened, guys? You could not do this. Answer someone. Rehan, Razan, Samiha, Samia. Samiha तो खैर अभी आई है.
सामिया, हाँ प्लीज भेजिए, जल्दी भेजिए। 2Cl negative dichlorido, है ना? And then what do we have? We have 4NH3. This will be tetraamine, right? This will be what? Tetraamine. अब इसमें सबसे पहले किसको लिखें? टेट्रामीन को, उसके बाद डाइक्लोरिडो को. Then we have in the second case 2H2O. This will be what? Diaqua. And then we have 4NH3. This will be again tetraamine. ये इतनी छोटी सी चीज लिखने में आपको इतना टाइम लग जा रहा है. अमीन एंड aqua, दोनों में ए है. देन यू लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, ABCDFGH के लिए JKLMNOP. So M is coming first and then Q. So this will be first and this will be second for aqua. Razan has sent. फर्स्ट में, अरे 1-2 कौन देगा? गलत है पहला वाला. देखिए डाइक्लोरिडो होगा ना, क्लोराइड लिख दिया, काउंटर नहीं, डाइक्लोरिडो लिखा है. सॉरी सॉरी, अच्छा 1-2 दिया है, सॉरी माय बैड, वो छुपा हुआ था एक दूसरे स्क्रीन से. डाइक्वा टेट्रामीन, ठीक है. डाइक्लोरिडो, ठीक है. pyridine, चलिए ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ तो हमने कर ही दिया था. या Razan, that is correct. Okay, please check your answers and then let's move on. Write the topic, not the topic, but the third thing that you want to learn in naming of ligand is the numerical prefixes to indicate number of ligand. Please write next. This is a naming of ligand, है ना? Ligands के naming में क्या है? Coordination entity, naming of ligands, and this is about di, tri, tetra, etc. Okay, numerical prefixes to indicate number of ligands. Name of ligands can be categorized into 2 different categories. There are certain names of ligands which are without any words such as di, tri, tetra in their names. Okay, there are certain ligands which are without. This is without di, tri, tetra. ये सारे नाम ना ligand के अंदर नहीं है, इनको in their names. We'll call this simple ligands. क्या बोलेंगे हम ऐसे ligand को? Simple ligands. ठीक है. For example, H2O का नाम क्या है? Its name is aqua. Aqua does not have dry tetra inside it. For example, Cl negative is what? Chlorido. Chlorido does not have di, tri, tetra in it. Similarly, if you have NO2 negative, it will be nitrito. This also does not have di, tri, tetra. Now, there are certain ligands which have these things with di, tri, tetra in their names. For example, you have ethane 1,2-diamine. This is one ligand, na? Ethane 1,2-diamine. This is the name of one of the ligands. Then you have PPH3. This is triphenyl. देखिए ट्राई आ गया यहाँ पे, है ना? So this has triphenyl. नेम में ही क्या है आपके पास? डाई, ट्राई, टेट्रा. ट्राइफेनाइल phosphine. Okay. Now, these type of ligands, we'll call them complex ligands or complicated ligands. Okay, we'll call them complex ligand. Naming क्या आता है बाहर से? Because they are a bit complex. जिसके अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाएगा. So if you have simple ligands, then we use di for 2, tri
for 3, tetra for 4, and so on. You know the drill. But if you have complex ligand, then you will use bis for 2. Then you will use tris for 3. You will use tetrakis for 4 ligands if it is complex. Similarly, pentakis if there are 5 such ligands. Please write this down. Write this down. Let me know once you're done. All of you understood this? Yes or no? Please tell me, guys. Rehan, Razan, Samia. Yes, sir. Yes? Sabko samajh mein aaya? Wafia, Sara, tell me. Yes. Wafia, what about you? Yes, sir. Yes, na? ठीक है. ध्यान में रखेंगे, when you have any ligand which already has di-tri-tetra in the name and they are coming 2 times, then we'll use bis ethane 1,2-diamine. है ना? If they are coming 3 times, tris ethane 1,2-diamine rather than tri ethane 1,2-diamine. Okay, so we'll use tris, bis and so on. ऐसा नहीं है कि डाई है तो सिर्फ डाई नहीं यूज कर सकते, डाई है तो ट्राई यूज कर सकते. नो, if you have डाई then you will use bis, tris or tetrakis, no matter what. Okay, write this down. Done writing this, yes or no? Yes, sir. Done. ठीक है. अब last point that we have is the oxidation state of central metal atom, and then we are directly going to start naming molecules. Okay, please write next. Oxidation state of central metal atom. I'm starting with an example. Please write the example. Nickel NH3 6. Cl2. Whenever you get a complex compound, you will first of all identify the counter ion. What is the counter ion here? Tell me, guys. काउंटर आयन क्या है? Cl2. हाँ, क्या लिखेंगे उसको? There are 2 Cl negatives, right? क्लोराइड है, जैसे आपके पास MgCl2 में होता है. क्या लिखते हैं इसको? What should I name this? Tell me. Counter ion. What should I name this? अरे बोलिए खुद से. हाँ. Chloride. और MgCl2 रहता था, क्या बोलते बताइए? What is this? MgCl2. How would you name this? What is the name of this molecule? What is the name of this compound? What is the name of this ionic compound? MgCl2. हाँ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना. तो काउंटर आयन तो कोई तो वैसे ही करना है. काउंटर आयन में क्लोराइड क्यों होगा? डाई क्यों होगा? कुछ नहीं होगा. काउंटर आयन में Cl है तो क्लोराइड. ठीक है, प्लीज ध्यान रखिए. काउंटर आयन इज नेम्ड एज इट इज, जैसे आयनिक कंपाउंड में नेम करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बी, दैट इज द लिगेंड्स. नाउ इन लिगेंड्स, टेल मी व्हाट डू वी हैव? What do we have? What are the ligands? बोलिए गाइस, कीप योर माइक ऑन. वाकिया सर, हाँ, सब माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बताइए. NH3. कितने NH3 है? How many NH3 do we have? 6. So if you have 6 NH3, then it will be what? Tell me. 6 के लिए what word should I use for 6? Hexamide. Hexa. ठीक है, hexa. After that, hexa Amine. amine. AMMINE. C is oxidation state of central metal atom. Okay, so we don't know the oxidation state of central metal atom, so nickel is going to be X plus.
6 into what is the oxidation state of NH3? What is the charge on NH3? NH3 is a neutral molecule. So that is why it will have 0 charge. And what charge is in there in Cl? We have 2 Cl and each of them has -1 charge. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Understood the Yes, complete thing? Now, this complete part, this complex compound, it is having 0 charge, right? It is not charged. As you can see, यहाँ पे कहीं charge दिख नहीं रहा आपको. So it is neutral, and that's why if you add the charges of all of these elements, it is going to be what? It is going to be 0. So from here, tell me what is x equal to? X will be equal to what? X will be equal to. Tell me, guys. X is 2. जोर से बोलिए. हाँ, +2. ये two. हाँ, +2. Okay. So +2 को रोमन न्यूमरल्स में आप ऐसे लिखिएगा. Okay, and when you write the name, see, D part is central metal atom को कैसे लिखते हैं? Because it is the last thing that we write. That is going to be nickel. So this is going to be nickel 2. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. A, B, C, D part. All of this is clear? ना central metal atom क्या है? Nickel 2 plus charge में तो nickel 2. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, हाँ sir. ना. हाँ, तो अब बताइए. Now what do we write first? Anion or cation? Whose name should I write first? Anion or cation? Whose name should I write first? Cation. Anion or cation? Now cation is the complex entity or the counter ion? What is the cation? What is the cation here? It is complex, the coordination entity, or is it the counter ion? What is the cation here? Oh my God, what is the cation here? Counter ion cation hai? Tell me. Counter ion is cation or anion? Counter ion is cation or Anion. anion. हाँ, तो what will be my cation? What will be my Nickel. cation? जोर से बोलिए. What will be my cation? Nickel. Nickel नहीं भाई, पूरा. This coordination entity is my cation. What is my cation, guys? Please tell me. The complete coordination entity inside the square brackets. This complete thing is your cation. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now sir. in coordination entity, whose name should I write first? Ligand या फिर central metal atom? Whose name should I write first? Ligand or central metal atom? Whose name is written first in coordination entity? Whose name is written first in Ligand. coordination? Ligand. Ligands. So my ligand is hexa. और जो लोग आंसर नहीं कर रहे ना, these guys are not answering from their head. अभी अभी लिखाया है हमने. Okay, if you see here, naming of coordination entity, ligands are named first and then the metal atom. Okay, so all of these things are written in your notebook itself. Those who are not answering. Hexa, amine, एक ही था, and then we will write nickel साथ में. Nickel, and then you will write 2, and after that you will give a space and you will write fluoride. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. चलिए, please छापिए. Now there are few things that you can do in your head. For example, if you have only one ligand, then आपके दिमाग में खुद ही hexamine आ जाएगा, है ना? And if you have simple only 2 or 3 things here, then you can easily calculate nickel. That is going to be x, NH3 is going to be 0, Cl is going to be -2, is equal to 0, तो x is equal to +2. ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें आप खुद like you can do it mentally also. You do not need to write this down completely. जैसे ये वाला था, तो इसमें आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी. You can do it just mentally also. But starting में ये सारी चीजें लिखी, तो आपको कम से कम जब आप mentally कर रहे हैं तो आपको पता है कि counter ion पहले देखना, उसके बाद ligand, उसके बाद oxidation state, and उसके बाद central metal atom. Okay, write this down.
चलिए, राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहीं पे प्रैक्टिस करके चली जाइए, ठीक है ना, बाद में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोज हु आर वेरी साइलेंट ना, प्लीज याद रखिए, यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल नॉट नीड टू प्रैक्टिस लेटर ऑन। चलिए, टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड सी। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड सी? Counter. Counter. Counter ion. Counter. Counter ion. Now counter ion is what? What is my counter ion? अब SO4 है ना आपके पास, तो इस तरह का आप सोचिए, आपने कौन सा मॉलिक्यूल देखा है? आपने क्या देखा है? आपने देखा है Na2SO4, MgSO4, ZnSO4, CuSO4। अब इसमें कैसे नाम करते थे बताइए? How did you name this? What is this? MgSO4, ZnSO4, Na2SO4. What are the name of these things? Tell me. फर्स्ट वन का बताइए, कैसे नेम करते थे इसको? How will you say the name? Na2SO4 for this formula. How will you say that? Sodium sulfate. Sodium sulfate, then magnesium sulfate, zinc sulfate, and copper sulfate. So sulfate is my name, and sulfate will have what? 2 negative charge. As you can see, copper 2 plus, SO4 2 negative, Zn2 plus, SO4 2 negative, right? So SO4 will have 2 negative charge. तो इसी तरह से ना एग्जाम्पल सोच के आप यहाँ पे चार्ज वगैरह पता लगा सकते हैं। समटाइम्स इट गेट्स वेरी लाइक कंफ्यूजिंग कि SO4 आ गया, क्या लिखे चार्ट में, तो आप एग्जाम्पल सोचिए कोई आयनिक मॉलिक्यूल का, देन यू विल अगेन गेट दी चार्ज आल्सो देयर, ठीक है? So SO4 2 negative, and this will be what? It will be sulfate. Now, what is the next thing that I should look? Tell me, guys. What is the next thing that I should look after counter ion? Ligands. Now, tell me, what are the ligands? What are the ligands, guys? जल्दी बोलिए ना, पहले बोल लीजिए, लिख लीजिए। Cl. So, what is the name of Cl? How should I? Chlorido. And then? NO2. अच्छा, NO2 में ना कंफ्यूजन आपको अगर हो रहा है ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसको नेगेटिव ही लेके चलिएगा हमेशा, ठीक है ना? पॉजिटिव बहुत ही रेयर केस में होता है। ओके, सो NO2 इज नाइट्रीटो। नाइट्रीटो N, करेक्ट है? Yes, sir. Yes or no? And then what do we have? NH3. NH3. But NH3 is 4 times, so we'll write 4 NH3. Tetra. It will be tetra amine. Now, C part is oxidation state of central metal atom. Now, for platinum, what should I write down? What is the oxidation state of platinum? Platinum will be what? What did I write for nickel here? हाँ, X. ठीक है, उसका नहीं पता, उसका निकालना है, तो it will be X plus. What about Cl? What about Cl? What will be the charge on Cl? What will be the charge on NO2? And then you have 4 ammonia. What will be the charge on ammonia? And then you have SO4. So what will be the charge on SO4? Which will be equal to 0. Chali. What will be the charge on Cl? Tell me, guys. Cl chlorido. Negative 1. NO2 में? NO2 के लिए क्या होगा? What will be the charge on NO2? देखिए बताइए. Look at the list and tell me. For NO2, what will be the charge? -1. -1. What about ammonia? What will be the charge on ammonia? 0. 0. What will be the charge on SO4? सल्फेट के लिए क्या चार्ज होगा? सल्फेट भी है, ठीक है ना, सल्फेट को मत भूलिएगा, सल्फेट भी है। What will be the charge on sulfate? What will be the charge on sulfate? अरे जल्दी बताइए। -2. -2. Now tell me, what is the value of X? What is the value of X? Quickly. +4. +4. बस D पार्ट में आपको क्या करना है? Central metal atom. What is central metal atom? Platinum. 4 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में?
I and then V. प्लैटिनम 4 लिख लिया आपने, अब नाम लिखना है. So first of all, cation. What is the cation? Coordination entity या counter ion? What is the cation? Coordination entity or counter ion? What is the cation? जल्दी बताइए. Coordination entity में हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? लिगेंड में. बताइए कौन सा लिगेंड सबसे पहले आएगा? क्लोरीन, NO2 या NH3? Which will be the first one? NH3. 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 After that, Chloride. chloride, and then we will write nitrogen. ठीक है? So we'll write first of all tetraamine. Chlorido, nitrito N, platinum 4, सल्फेट. अब इतना बड़ा नाम आप एक बार में मत लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद आप नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे. ओके, सो डोंट ट्राई एंड अटेम्प्ट राइटिंग द कंप्लीट नेम, उसमें मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. ठीक है, टेक स्मॉल स्टेप्स. छापिए इसको. And once you are done with this one, I hope you have written the question at least. You will try CrNH3 whole thrice, H2O whole thrice, Cl2. This is the question for you guys. Once you're done, you will send the answer on my WhatsApp.
Samiha, looking at your answer. You forgot something. Samiha, you forgot something. See, what did you forget? Everything is correct, but you forgot something. The counter. हाँ, आपने काउंटर आयन का नाम नहीं लिखा. सारा पार्कर, everything is correct, but chromium का spelling सही नहीं है. CHROMIUM. Okay, so if you are a bit confused, तो एक बार देख लीजिए फिर. Periodic table होगा, periodic table में देख लीजिए उन सारी चीजों के नाम, right? At least the 3D series. Okay, so you're starting with scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, right, and so on. Manganese with iron, cobalt, nickel, copper, zinc, and so on. So try to check their spellings at least. Other things are fine. And one more mistake that you have done is amine will have 2 M's, Anna, Sarah, not 1 M. Okay, so please Yes. correct it. If you have not, if you have written it wrongly, please correct it. Other things are fine. Yeah, no, okay, fine. There are Wafia oxidation state is not correct, na? See, look at the oxidation state Wafia. How many Cl do you have? You have 3 Cl negative, right? So it will be -3, not -1. Or rather, you should have done like this: 3 into -1. I know. So it will be +3. Okay, sir. Okay, only got answer from 3 of you: Wafia, Sara, and Samiha. Razan, send me your answer. Razan, Rehan, and I think, yeah, only you two guys. Rehan and Razan, please send the answers. Razan and Rehan, are you stuck? Sir, just the green sign. Rehan, what about you? Are you stuck on something? No, sir, I'm doing. Jaldi कीजिए. It should not take that much time. You just have 2 ligands यहाँ पे. ओ, कितना देर लगेगा? Rehan and Razan, how much time will you take? 2 minutes, sir. 2 मिनट लगेगा? क्यों 2 मिनट लगेगा? किस चीज में इतना टाइम लग रहा है? 2 मिनट तो आपको हमने जब समझा के किया तब भी नहीं लग रहा था. You identified the counter. Keep your mic on, Rehan. You identified the counter ion, Yeah, sir. ligands, Yes. oxidation state of central metal atom. Yeah. Is it -1? नहीं, फिर से देखिए आप बिल्कुल कॉपी कीजिए ना जिस तरह से हम कर रहे थे. कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट
व्हाट डू आई लुक फॉर? सबसे पहले किसका निकालना है? whose oxidation state? रेहान, NH3 अच्छा नहीं क्रोमियम क्रोमियम का है ना। ना व्हाट एल्स? क्रोमियम का क्या लेंगे फिर? एक्स ले लेंगे क्रोमियम को। यस उसके बाद NH3 का कितना होगा? 3 इंटू 3 थ्री 3 इंटू into 0 इंटू हाँ, फॉर 0 वाटर, फॉर वाटर 3 into 1 ना वाटर क्या आपके चार्ज होता है? देखिए, वाटर चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है? अच्छा 3 into 0 एंड देन फॉर Cl -2 -2, -2 लिया है हमने Cl के लिए। हाँ, यस कब लिया है -2? कहाँ लिया है -2? अच्छा हाँ -1 सॉरी -1, बस -1 लेंगे। या NH3 के लिए क्या क्या लिखा था आपने? NH3 के लिए टेल मी व्हाट डू वी राइट फॉर NH3? 0 0 या 3 इंटू 0? 3 into 0 क्लोरीन के लिए -1 3 इंटू -1 नहीं होगा, वहां पे 3 क्लोरीन है तो। ओके कहाँ ध्यान है आपका? डिड वी नॉट डू द सेम थिंग इन द प्रीवियस केस? यहाँ पे 2 इंटू -1 है ना, सी द डिफरेंस? -2 नहीं है ये। ओके, सो फॉर क्लोरीन इट इज नॉट -2, इट इज 2 इंटू -1। प्लीज पे अटेंशन। यस The name will be triamine, triaqua, chromium 123 chloride। ट्राइक्लोरिडोन मत लिख के आ जाइएगा, AlCl3 में एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, सो इट इज काउंटर आयन एज इट इज। Triamine, triaqua, chromium 3 chloride। Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Can we move on? Can we move on? Write the name. Yes, Write sir. the write the next part. Naming of central metal atom or ion. Okay. Now, कुछ के लिए तो it's like simple that you name it as nickel or you name it as, in all of these cases where you have cationic, no, you named it chromium, platinum, and nickel. But if you have anionic ligand, sorry, anionic uh, coordination entity, then you name it a bit different. Please write first of all name of cationic and neutral, cationic and neutral complex ion, neutral complex ions central metal atom is written as it is. Right, next. Name of metals. Name of metals. In anionic complexes ends with ATE. Ends with ATE. Okay, so for example, if you have zinc as the central metal atom in anionic complex, then it will be zincate. If you have Cr, it will be chromate. Okay. If you have aluminium, it will be aluminate. And if you have cobalt, it will be cobaltate. Okay. In some methods, it's very simple, right? For some metals, for some metals
in anionic complex, we use Latin name. We use Latin names. For example, if you have iron as a central metal atom in an anionic complex, we will use ferrate. If you have gold, we will use aurate. If you have silver, we will use argentate. For copper, we use cuprate. For tin, we use stannate. Okay, if you have anionic complex, ठीक है, तो counter ion अगर आपके पास counter ion क्या होगा? Counter ion is going to be cationic, and you have anionic complex. Please write this down. All of you done writing this, yes or no? Please tell me. If you're done, please write example. K4 FeCN6. Okay, K4 FeCN6. A part, my counter ion is K4 मत कीजिए, K3 कर लीजिए आप. 6, हाँ, K4, हाँ, K4 भी चलेगा. Wait a second. K3 कर लीजिए लेकिन. Okay, so we have 3 K plus, so it is going to be potassium. Then B is ligand, 6 Cn negative, which will be hexacyanido. The oxidation state on central metal atom, oxidation state is going to be what? 3 into +1 plus Fe के लिए x plus 6 into -1, completely equal to 0. So x will be equal to how much? X will be equal to +3. ठीक है. अब यहाँ पे मत बोलिएगा सर ये तो कटायनिक है. अरे नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका क्या होना चाहिए? सी, दिस इज K plus counter ion is cation. So coordination entity क्या होगा आपके पास? Coordination entity will be anion. Central metal atom is Fe. ठीक है. Fe को आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेरेट. And 1, 2, 3 as it is. ठीक है. So the complete name will be what? We will first of all write the cation. Cation is counter ion, which is potassium. So it will be potassium. Then you will give a space. Then we write the coordination entity, which is the anion. In coordination entity, we will start with ligand, that is hexacyanido. After that, we write the metal atom. Central metal atom is ferrate. Ferrate, and then Roman number में 1, 2, 3 the oxidation state. छापिए. When the coordination entity is anionic, central metal atom anionic नहीं होगा. ठीक है. Metal है तो उसकी tendency होती है electron lose करने की. So it will always be cationic only. Your oxidation state of central metal atom will be always in positive, and it will be 0 sometimes, but वो negative में नहीं होगा. हाँ, rather the coordination entity completely, the complex ion inside the square brackets, that can be anionic. Where your counter ion positive होगा, coordination entity negative होगा.
So this see an example. You have AgNH3 whole twice. And here you have AgCN whole twice. Okay. Now in this case, we have what? Cationic and anionic. Both of these are coordination entity only. Okay, both of these are what? Coordination entity only. So first of all, you will, in these type of cases, you will find out the oxidation state of metal atom because the metal atom is the same. So एक केस में यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, oxidation state find कर लीजिए सबसे पहले. Oxidation state Ag and Ag, there are two Ag, so it will be 2x plus NH3 is what? 2 into 0 plus Cn is what? 2 into minus 1. So this will be equal to 0 and you will have x is equal to plus 1. 2 minus 1 will go there and x will be equal to plus 1. Once you have calculated the oxidation state, you will treat the cation and anion separately. You have the cation here and you have the anion here. Now after that we go through the same things, ligand. In the case of cation, the ligand is NH3 and two NH3 are present. So this is going to be diammine, and then we have the metal, central metal atom. In cation, it is what? Ag. Now it is Ag, so it will be what? Silver 1. Okay. Now in anion, we have the ligand, which is 2Cn negative, which will be dicyanide, and C, that is central metal atom. Here also it is Ag, but in this case it will not be silver, it will be argentate 1 because it is anionic. Argentate 1. ठीक है. अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए. सबसे पहले cation में we have coordination entity में we'll write the ligands first. So it will be diamine. After that we'll write silver 1. Then we will give the space, and in anion also we'll write the ligands first, that is dicyanide. Argentate 1. Chap guys. Cation first, anion later. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Still writing? Or done? Done, no? Done. Right, the next part. Let us suppose you have been given name and they are asking you to write the formula for it. So the next part is formula from the name. ठीक है. So generally it is easy, लेकिन इसमें आपको difficulty होगी to get the number of counter ion. देखिए, for example, अगर आपके पास here you had here you had 3 chlorides, है ना? यहाँ पे आपके पास 3Cl था, तो still it was chloride only. There is no change. And here also it was chloride, but in this case you had 2Cl. इसी में आपको दिक्कत हो सकती है. बाकी everything is going to be very simple. ठीक है? So I'm giving you a name. Please write the name. Sodium hexanitrate N cobaltate. A part, sodium hexanitrate N cobaltate 1, 2, 3. ठीक है? Cobaltate 1, 2, 3. First thing that you are going to do is very simple, that is to write the
कॉम्प्लेक्स आयन, आप काउंटर आयन को छोड़ दीजिए, सिर्फ राइट द कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए दीज आर आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉपी में ही लिखें, है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस इन योर हेड ऑल्सो, है ना, इफ यू कैन वर्क इज ऑन योर हेड एंड दैट इज द आइडियल केस। जब आप 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप सबसे पहले सोचिएगा व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास मेटल है यहाँ पे कोबाल्ट, and then what is my ligand? We have the ligand NO2, and how many NO2 do we have? We have 6 NO2s. ठीक है guys, yes or no, please tell me. Is that correct? Yes or no, please tell me guys. Any difficulty till here? सबको दिख रहा है ना? When you look at this, you picture this, yes or no? Rehan, Yes. Razan, Sara, Vakya, yeah. Similarly, after that, you will determine oxidation state of central metal atom in above. ठीक है, यहां पे देखना है आपको बस, कोबाल्ट एंड NO2 6, तो आपके पास कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू NO2 में क्या चार्ज होता है, टेल मी गाइस, व्हाट इज द चार्ज ऑन NO2? अरे इतना कराया अभी, NO2 पे क्या चार्ज होता है? रेहान, रजान, सारा, वाफिया, -1. -1. दिस विल बी इक्वल टू -6, यस और नो, प्लीज टेल मी। ठीक है, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes. Yes. सी Plus नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या कीजिएगा आप, डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन Six आएगा। +6. पॉजिटिव 6 क्यों आएगा? अच्छा ठीक है, पॉजिटिव 6 लीजिए चाहे -6 लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आप लिखिएगा और इसको बाद इम्प्लाई करके, ठीक है, +6 कर लीजिए आप, ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए लेकिन, ठीक है ना, या तो रफ पेज में होनी चाहिए, ठीक है, दीज आर नॉट लाइक एक्चुअल स्टेप्स आप यहाँ से करें। देन यू विल डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट अबव एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन नेम। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इक्वल टू 6 माइनस, और ओरिजिनली कितना है नेम में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन नेम, बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है नेम में? 3. अरे 3 दिया हुआ है ना, तो 6 माइनस 3, डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, करेक्ट है गाइस, ठीक है। डी लास्ट पार्ट आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ काउंटर आयन is equal to the difference upon oxidation state of counter ion। तो डिफरेंस है आपके पास इस केस में 3। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, व्हाट इज द जनरल वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, टेल मी गाइस, व्हाट इज द जनरल वैलेंसी ऑफ सोडियम? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जल्दी बताइए। अरे ओहो, व्हाट इज द, क्या, +1. +1 है ना, तो आप इसको बस +1 मतलब सबको पॉजिटिव ही लिखिएगा, अगर क्लोरीन का -1 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसके लिए, जस्ट टाइम 1 हियर, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो कितने सोडियम होंगे आपके पास, यू विल हैव 3 सोडियम्स। व्हाट विल बी योर नेम? योर नेम विल बी, नॉट योर नेम, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी Na3, इन ब्रैकेट यू विल राइट कोबाल्ट NO2 होल 6, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल गेट द नेम, बस इसमें ध्यान रखिएगा स्टेप्स सही से फॉलो कीजिए आप लोग, है ना, एंड ऑल ऑफ दीज स्टेप्स एज यू कैन सी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप इसको खुद ब खुद मेंटली दिमाग में भी कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाँ अलबत्ता ये कि आपको पता होना चाहिए सोडियम की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, सल्फेट होगा तो सल्फेट में -2 होता है, क्लोरीन में -1 होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू नो।
एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ना यहाँ पे चार्ज निकाल लिया तो एक और तरीका है जो विच इज वेरी सिमिलर टू द केसेस जब हम लोग क्या करते थे इन 11th स्टैंडर्ड इफ यू हैव एल्यूमिनियम एंड यू हैव क्लोरीन. So what is the valency of aluminium? It is 3. What is the valency of chlorine? It is 1. And we used to cross multiply to get the formula, na? AlCl3. You know of this method? Yes or no? Tell me, guys. 9th standard में भी ये method है, 11th में भी है. You know this method of getting the formula using cross multiplication इस तरह से? Cross multiply the things, valencies. Have you Yes, sir. seen this? Sir? You have seen this, ना? रजान ने तो देखा होगा, 11th में पढ़ाया था हमने. Same thing आप यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे for example, you have sodium. Okay? सोडियम हो गया यहाँ पे एंड यू हैव CO NO2 NO2 होल 6. ठीक है, CO NO2 होल 6. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोडियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? इट इज 1. ठीक है, एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस पार्ट हियर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वैलेंसी क्या हो जाएगा? देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वैलेंसी हो जाएगा NO2 में है आपके पास -6, कोबाल्ट में है आपके पास +3, जो कि नाम में दिया हुआ है. तो व्हाट विल बी द वैलेंसी यहाँ पे? द वैलेंसी इज गोइंग टू बी 3 और 6 में देखिएगा तो इट विल बी 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल बी सोडियम 3 कोबाल्ट NO2 होल 6. ठीक है, यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो. मेथड्स तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू टू डू दैट वन. चलिए एक आप लोग सवाल लिखिएगा प्लीज. हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 1 2 3 सल्फेट. ठीक है, 5 मिनट दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से फॉर्मूला बताइए क्या होगा.
One more minute, guys. After that, you will show me your work, whatever you have written. Yeah, please send me your work, guys. Whatever you have done till now, A, B, C, D, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? For hexaamine cobalt 3 sulfate. Guys, please send the answers, whatever you have done till now. Okay, I think Rihan has sent the answer. It's not completed. कॉम्प्लेक्स आयन आपको लिखने के लिए कहा था ना, तो सल्फेट क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है, काउंटर आयन है? रेहान, सल्फेट इज काउंटर आयन या फिर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आएगा? बस Counter ion. काउंटर आयन, तो काउंटर आयन तो नहीं लिखना था, राइट? Yes. ठीक है, उस पर ठीक कीजिए. सेम थिंग विथ रजान. सल्फेट तो काउंटर आयन होगा ना, लिगेंड और सेंटर मेटल एटम कॉम्प्लेक्स आयन होगा. ओके, सो राइट द कॉम्प्लेक्स आयन ओनली, उसके बाद यू प्रोसीड. काउंटर आयन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले राइट द कॉम्प्लेक्स आयन ओनली. ओनली लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे हमें? सारा एंड वापस प्लीज सेंड योर आंसर्स व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ. Sarah and Wafia, please send me whatever you have done till now. ये Wafia received yours. आपने भी वही लिखा हुआ था, है ना? देखिए, complex ion without the counter ion, so it will be cobalt NH3, cobalt NH3 whole 6. Now oxidation state of cobalt in this case it is equal to what? 0, because NH3 will have what? 0 charge, so it is going to be 0. The difference will always be positive. Take a difference 0 से 3 में कितने का difference है? 3 का. So 0, rather you can do 3 minus 0. ठीक है, जो भी पॉजिटिव आ जाए तो it will be 3. डिफरेंस है 3 का. Is that right? Yes or no? Please tell me, guys. Correct? Yes, sir. Now, number of counter ion will be equal to how much? The difference upon the oxidation state of counter ion. Difference is 3. What is the oxidation state of counter ion? Tell me, guys. Sulfate में क्या charge होता है? What is the charge on sulfate? जोर से बोलिए.
charge on sulfate +2. ठीक है, so number of counter ion कितना हो जाएगा 3/2. You write it like this. First is cation ना, तो cation को पहले लिखते हैं CONH3 whole 6 and then you have SO4 3/2. तो 3/2 तो ऐसे नहीं होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get cobalt NH3 whole 6 twice and SO4 thrice. बात समझ में आई सबको? You had this cobalt NH3 whole 6. This had यहाँ पे 3 था, so this was valency 3. SO4's valency was 2. Cross multiply cobalt NH3 whole 6 twice, SO4 thrice. Please copy this down. पॉजिटिव में ही खेलिएगा, ओके, डोंट प्ले विथ नेगेटिव्स यहाँ पे, जितना हो सके लाइक कीप इट पॉजिटिव्स. डिफरेंस आपको बस बताना है ना. सो 0 से 3 में डिफरेंस कितने का होगा? 3 का डिफरेंस है, राइट? यू हैव टू से दैट वर्ड 3 -3 3 का डिफरेंस है. 6 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. जस्ट चूज 2 नंबर्स एंड देयर डिफरेंस डिवाइड बाय दी. ओके, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अदरवाइज यू मस्ट हैव सीन समथिंग लाइक दिस. अगर आपके पास व्हाट डू आई से मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन है, ठीक है, सो Mg एंड नाइट्रोजन. So Mg has the oxidation state of 2, nitrogen has 3. So we cross multiply and we get it Mg thrice and 2 nitrogen, something like this, right? Magnesium nitride. So these type of things we have seen in ionic compounds.